The engine of JF-17 Thunder fighter develops a thrust of 3000 newtons. What horsepower does it produce at the velocity of 600 meters per second? JF-17 Thunder जो कि एक पाकिस्तानी फाइटर जेट है, वो 3000 का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। अगर उसकी वेलोसिटी 600 मीटर्स पर सेकेंड हो तो हार्स पावर में उसका पावर कितना होगा? हार्स पावर पावर का एक यूनिट है। सबसे पहले हम पावर कैलकुलेट करेंगे वॉट्स में और फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे हॉर्स पावर में। वी नो डेट पावर इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। हमें ये भी पता है कि वर्क डन इज़ गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। We also know that displacement per unit time is equal to velocity of the body. Power of a body is given by the dot product of the force acting on the body and velocity of the body. Plugging the values in, we get 3000 times 600. Multiplying both these, we get 1,800,000 watt. Now let's convert these watts into horsepower. So we know that 1 horsepower is equal to 746 watts. हमें watts दिए गए हैं, so we will just convert this 746 into 1 and then multiply this thing with the 1 to get our required value. We will divide both sides by 746. So this will become 1 watt. 1 divided by 746 horsepower. अब चूँकि हम 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ वाट्स को हार्स पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. इट विल बिकम 1.8 multiplied by 10⁻⁶ watts is equal to 1.8 times 10⁻⁶ divided by 746 horsepower. Calculating this thing, we will get 2412 horsepower. So JF-17 थंडर फाइटर जो कि 3000 न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी वेलोसिटी 600 मीटर्स पर सेकेंड है, उसका पावर 2412 हॉर्स पावर है.